Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ayman from Army Public School and College Zamzama. This is online support program for class 6 and this pre-coaching class is for the upcoming class 7th, subject science. Message of the day students, say please when asking, say thank you when receiving, show respect for others and elders, be polite when someone serves you. Put away technology at meal times and conversations. This week's overview chapter Simple Chemical Reactions. Page number 96 to 107, topic Chemical Reactions. What are the chemical reactions? Students, as you know that the chemical reactions is in which the reactants combine and they will form the product and the product will be completely new. The warm-up questions are: what are the types of the chemical reactions? What are the reversible and irreversible reactions? Objectives: describe oxidation, combustion, respiration and corrosion. स्टूडेंट्स, लास्ट वीक की वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए थे, सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्दर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. First we will discuss the what is oxidation. Oxidation happens when a substance reacts with oxygen forming an oxide. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तब होता है जब सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑक्साइड हो जाएगा. मींस के ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स को ऑक्सीडाइज करके ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे. सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन. Number one is combustion, the other one is respiration, and the third one is corrosion. So first we will discuss the combustion. Combustion is another name of burning. When a fuel burns, it reacts with oxygen in air and produce heat and light energy. Students, as we know from start, that burning process only occurs in the presence of oxygen. जितने भी fuels हैं that only burns in presence of oxygen. So fuel oxygen के साथ react करके it will produce the heat and light energy. The fuel become oxidized, forming an oxide. Oxygen जो है वो fuel को oxidize कर देगा and it will produce the oxide. जो products होंगे वो oxide होंगे. Fuels such as wood, coal, oil and methane, another name of methane that is natural gas, burns well because they contain elements carbon and hydrogen. They are called the hydrocarbons. Students, जिस सब्सटेंस में कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं they can burn easily, and the substance which contain carbon and hydrogen they are called the hydrocarbons. During burning, these elements combine with oxygen to form carbon dioxide and water. Fuel जो है वो ऑक्सीजन के साथ react करके they will form the products like carbon dioxide and water. Now here you can see in this diagram the essential things which are necessary for the fire burning process. It is oxygen. When there is oxygen, the fuel burns and it will produce the heat and light energy. Okay, you can see the reaction. Fuel reacts with oxygen. They form the products and they are called the carbon dioxide and water. It's mean कि oxygen ने fuel को oxidize करके oxides produce किए. Burning fuel gives us heat for cooking. ठीक है, burning process से जो heat produce होगा we can use it for cooking. Now the second one is respiration. The human body needs fuel to produce energy. The food we eat provides us with fuel, mainly in the form of carbohydrates. Carbohydrates such as glucose contain the elements carbon, hydrogen and oxygen.
Students, as you know, for daily life activities we need energy, and this energy is come from the food which we take. So food which we take is composed of carbohydrates such as glucose, contain the elements कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. सो हमने पढ़ा कि जिन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, लेकिन ग्लूकोज में यहाँ पे एक एलिमेंट का इजाफा हो गया है जो कि ऑक्सीजन है. सो इस वजह से हम इसको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहेंगे. दे आर कॉल्ड दी carbohydrates. So carbohydrates are burned slowly without any flame inside the cells of the body. This form of combustion is called the respiration. Oxygen which we inhale, so उस ऑक्सीजन की हेल्प से respiration का प्रोसेस होगा and it will produce the energy for us. ठीक है. स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ब्रीथिंग में एंड रेस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग दैट इज़ डिफरेंट. रेस्पिरेशन में फूड जो हम इनटेक करते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन. एंड ब्रीथिंग इज़ द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ द गैस. ठीक है. जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं फिर वो ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, मींस के फूड की ब्रेक डाउन में. और जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर हम ब्रीथिंग में उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं. Here you can see the diagram. Carbohydrates are our fuel. So you can see the reaction. The glucose reacts with oxygen. It's mean कि oxygen glucose को oxidize करके it will produce the carbon dioxide plus water and energy for us. Now the third one is corrosion. A metal corrodes whenever a chemical such as water, air and acid attack its surface. corrosion उसे कहते हैं जंग लग जाने को. ठीक है. जिसमें किसी भी मेटल पे केमिकल अटैक करके उस पे जो है उसे जंग लगा देता है. जैसे कि कोई भी केमिकल लाइक वाटर, एयर एंड एसिड उस पे अटैक करेगा. First, the metal loses its shiny surface, becomes tarnished when it is slowly eaten away and weakened. ठीक है. जब उस पर अटैक हो जाएगा वाटर, एयर या एसिड का, उसे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले जो उसकी जो शाइनी सरफेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होने लग जाता है मेटल. Metals which are most reactive cannot be used to make things because they are quickly corroded by air and water. Even metals such as iron, which are not very reactive, can suffer the effects of corrosion. बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए कि उसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को यूज़ ना करें क्योंकि उस पर अटैक बहुत जल्दी हो जाता है. इवन के जो मेटल है जो कि नॉन रिएक्टिव है उसे भी जंग लग जाता है, हालांकि वो नॉन रिएक्टिव है. व्हेन आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, brown iron oxide is formed. Iron oxide is commonly known as rust. Here you can see iron ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मीन्स कि ऑक्सीजन ने आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया एंड इट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर कॉल्ड द आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर. यू कैन सी कि इसको जंग लग चुका है और इसको रस्ट कहते हैं. Now we will discuss the reversible reactions and irreversible chemical reactions. All of the chemical reactions we have looked at so far are the impossible to reverse. We can never get the reactants in reaction back from products. Reactions which are one way called irreversible reactions. Students, दो तरह के reactions होते हैं, कुछ reversible होते हैं, कुछ irreversible होते हैं. So हमने जो ऊपर जो डिस्कस किए केमिकल रिएक्शन वो सारे इर्रिवर्सिबल हैं.
जो कि जिसमें प्रोडक्ट किसी सूरत वापस रिएक्टेंट्स में नहीं जा सकता, उससे हम दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं ले सकते. There are some chemical reactions, however, which can be reversed. Reversible reactions can have double arrow showing the reaction can go into two directions. An example of reversible change is the heating by blue hydrated copper sulfate. It decomposes to give white anhydrous copper sulfate and water vapors. If water is added to white copper sulfate, the reaction is reversed. स्टूडेंट्स हम हाइड्रस ब्लू कॉपर सल्फेट लेंगे. हाइड्रस का मतलब ये है कि इस कॉपर सल्फेट में वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब हैं. अब जब हम इसको हीट अप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. देखें रिएक्शन में कि कॉपर सल्फेट है प्लस हीट का मतलब हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया सो इससे वाइट कॉपर सल्फेट बन गया. ठीक है, और जो वाटर वेपर्स थे वो इससे रिलीज हो गए. अब देखें हियर यू कैन सी द अनदर एरो विच इज़ यूज फॉर रिवर्सिबल. ठीक है, कि ये रिएक्शन दोबारा से रिवर्स हो सकता है. जब इसमें से हीट लॉस हो जाएगी और दोबारा से ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर ले, सो इट अगेन कन्वर्ट इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट. थैंक यू.